SYBCom. People can join here directly now. SYBCom students who are there on that link, please come here directly. Or else let me see if I can share the link over there. देखते नहीं, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है. Whoever is coming live currently with me, SYBCom, please share the link in your respective group with your friends so that they can connect with us. I will wait for 5 minutes and then we will start. क्या मोबाइल मेरा बोले तो जय नहीं ना, वाईफाई का लोचा है मेरा हो रहा. Okay, those who have joined here, please share the link in your respective groups with your friends, with your relatives, जो भी है वो, so that they can come over here. We will wait for 2-3 minutes and then we will start. 11 10 को हम लोग शुरू करते हैं. कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है. Please share the link in your respective groups with your friends. इस कॉलेज के दूसरे कॉलेज के जो भी है वो. I hope I am clear now. अब सुनाई दे रहा है बराबर? Someone please respond in the chat box. सुनाई दे रहा है? Yes or no? Hello. लोचा है. Okay, हाँ चला गया है. प्लीज शेयर द लिंक और फिर यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं सो दैट जो लोग टूट चुके हैं या जो लोग वो लिंक पे जाए वो लोग वापस यहाँ पे आ सकते हैं. So SYBCom, I hope you are clear with management accounting, and now we are going to start with FA, that is financial management and accountancy and financial management, one and the same. आगे जाके इसके नाम चेंज होते रहने वाले हैं बराबर. But then starting with the important thing. The topics that you have in FA are पहला financial accounting में partnership final account, right? A partnership final account will be having different types of terms and you have already solved it. आप लोग को normal final account है, आप लोग को admission के समय, आपको retirement का समय और आपको death का समय. Now be very practical कि at the time of retirement, at the time of death, at the time of admission, the clauses or the requirements which you are supposed to do in account are different. और उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एडमिशन में पार्टनर कैपिटल लाएगा या हम लोग उसको कैपिटल देंगे. ब्रिंग और गिव, व्हाट डू यू थिंक? उसको जरा रिप्लाई कर दो फटाफट चैट बॉक्स में. इन केस ऑफ एडमिशन द पार्टनर डैश द कैपिटल, ब्रिंग्स द कैपिटल, टेक्स द कैपिटल, विथड्रॉज द कैपिटल और नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक? In admission, new partner brings the capital, takes the capital, withdraws the capital, or none of the above. Brings the capital, right? In case of admission, the new partner always brings goodwill in cash, in check, in asset, or currency. What do you think? In case of admission, the new partner always brings goodwill in cash, in check, in asset or currency. Is it? Goodwill जो भी नया पार्टनर लाएगा हमेशा नया, always the word है. So is it the case that new partner will always bring goodwill? No. Always. पहली बात तो ये है कि उस always word की वजह से हम लोग आगे जा ही नहीं सकते. He never brings goodwill always. At times, goodwill लाते हैं. अगर नहीं लाया तो goodwill is just raised in the books of the firm. I am not prepared video for y'all, but then एक छोटा सा advice है. मतलब इसको एकदम डिटेल, एकदम छोटे लेवल पे सीखना है, मतलब डिटेल में छोटे बच्चों की तरह. तो SYBC, there are introduction topics of admission, retirement, and death, and dissolution also. But dissolution हम लोग already कर चुके हैं. That's the reason why I have not uploaded videos separately for SY again. Okay? So your first topic, whatever you have, admission है, retirement है या death है, उसके आप introduction videos कहाँ से देखोगे? SYBC के admission playlist से. Okay? It's not the case that new partner will always bring goodwill.
अगर उसके पास पैसा नहीं है और पुराने पार्टनर्स की जिद है राइट कि हम लोग रिजल्ट करेंगे, अगर हम लोग गुडविल वैल्यू करेंगे, तो उस केस में गुडविल इज जस्ट रेज्ड इन द क्लियर। ओके, द इन केस ऑफ एडमिशन गुडविल रेज्ड या गुडविल ब्रॉड या गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज डिवाइडेड इन डैश रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। In case of admission, the goodwill of new partner is divided in dash, profit sharing ratio, capital ratio, sacrifice ratio या gain ratio. What should be your answer? It is always in sacrifice ratio. Okay, sacrifice यानी क्या? हम लोग दो जन हैं समझो, जो कि 5-5 रुपया प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट है, we are dividing 5 equally. If I am admitting someone else और 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो क्या अभी भी हम लोग तीनों 5-5 ले पाएंगे? नो, हम लोग 3 रुपीज 33 पैसे, 3 रुपीज 33 पैसे, 3 रुपीज 34 पैसे ले पाएंगे। That means we are giving out some of the share of a profit, right? तो जितना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर्स को दिया, that is what sacrifice ratio is, and hence the goodwill is divided in sacrifice ratio. Clear? In case of death, the goodwill is divided between continuing partners in dash ratio. In case of death, the goodwill is divided in dash ratio. क्या लगता है? Profit sharing, capital, gain ratio या sacrifice ratio? In case of retirement and death, goodwill will be divided in which ratio? Profit sharing ratio, capital ratio, gain ratio या sacrifice? It will be in gain ratio. Exactly opposite. ठीक है. In case of death, the amount payable to the deceased partner is transferred to dash. In case of death, the amount payable to the deceased partner is transferred to dash. His loan account, his capital account, his legal hire account, or any of the above. In case of death, the amount payable to the deceased partner is transferred to his capital account, his loan account, his legal hire account, or any of the above. क्या लगता है? पार्टनर भाग गया तो उसको उठा के पैसा भेजनी चाहिए, ये बहुत पैसा लग रहा और बाद में जाए, इज इट सो? नहीं, उसके लोन में नहीं, इसको लीगल हायर अकाउंट, इट्स ऑलवेज ट्रांसफर टू दिस लीगल हायर अकाउंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उसको देना है उतना पैसा, राइट? तो सब टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन योर फर्स्ट। एडमिशन के अलग कंडीशंस है, रिटायरमेंट के अलग कंडीशंस है, डेथ के अलग कंडीशंस है। ओके, अच्छा, they may ask you to divide some expenses. ABC firm, Mr. A and B are carrying on business. Okay, from first Jan. On 1st August, they admitted Mr. C. The profit of the firm is to be divided in the ratio. So, will be divided in the ratio. So, of Jan, Feb, March, April, May, June, July. 7 महीना, August, September, October, November, December. 5 महीना, तो 7 महीना 5 महीना हमें उसको टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन। क्लियर? यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट हाउ टू डिवाइड द थिंग्स, डिपार्टमेंटल फाइनल अपन आप लोग कर चुके हैं, राइट? अगर नहीं याद नहीं है एफआई में क्या क्या था, पता ही नहीं चला, एफआई शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, डिपार्टमेंटल अकाउंट का भी एफआई अकाउंट की प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो यू कैन गो, सब मिलेगा, अपने पास सब कुछ है, एमकॉम तक क्लियर, एफवाई से एमकॉम तक जो चाहिए वो मिलेगा, बस मुझे सिर्फ पूछो क्या चाहिए, मैं बोल दूंगा कहाँ मिलेगा। ओके, देन सेइंग अबाउट piecemeal distribution. Piecemeal means the capital received after the division of profit sharing ratio is known as dash. The capital received या capital arrived after the division of your profit sharing ratio is known as dash. Proportionate capital, existing capital, unit capital, or capital.
क्या लगता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने के बाद जो मिला दैट इज योर एडजस्टेड कैपिटल, यूनिट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल और जस्ट नॉर्मल कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है विच इज रॉन्ग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जब डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला? यूनिट कैपिटल। ओके, ध्यान से पढ़ना, एकदम आराम से पढ़ना। इन डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन the answer should be unit capital. Everyone is wrong up till now. The answer should be unit capital. In decimal distribution, the accumulated losses are dash added to the partner's capital, deducted from the partner's capital, divided by the partner's capital, and multiplied by the partner's capital. In decimal distribution, the accumulated profits are dash added to the partner's capital, subtracted from the partner's capital, divided by the partner's capital, or multiplied to the partner's capital. What do you think? ये तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए मतलब ऑन द स्पॉट दिमाग लगाने लग रहा हूँ। टेक्स्टबुक तो करेंटली है नहीं अवेलेबल। इट इज deducted. Okay, very good. Subtracted, deducted, one and the same. So read the options carefully and accordingly mark your answer. Okay. For finding the proportionate capital, dash capital of the partners is taken as base. For finding the proportionate capital, dash capital of the partners is taken as base. Minimum, maximum, equal या एडजस्टेड। मिनिमम, मैक्सिमम, इक्वल या एडजस्टेड। फॉर फाइंडिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, डैश कैपिटल इज टेकन एज बेस। ऑलवेज कौन सा? जो मिनिमम है वो। मिनिमम कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढते हैं। बराबर है? द अल्टीमेट कैपिटल received in statement of excess capital is known as dash. The ultimate capital received in statement of seasonal distribution in statement of excess capital is known as dash. Proportionate capital, excess capital, unit capital या adjusted capital. Proportionate capital, excess capital, unit capital या adjusted capital? क्या लगता है? It's always excess capital. जो अल्टीमेट मिलेगा दैट इज अल्टीमेट एक्सेस। और एक्सेस तो एक्सेस लिखा तो ठीक चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेट एक्सेस अगर वर्ड दिया हुआ है तो योर आंसर शुड बी दैट। ओके, इन decimal distribution, okay, dash liabilities are paid first. Internal, external both in proportion or all of the above या none of the above. Sorry, all of the above नहीं लिखूंगा, none of the above. Confusion वाले सेंटेंस कभी नहीं मिलेंगे आपको। Okay, in decimal distribution, dash liabilities are paid out first. Internal, external both or none of the above. क्या लगता है? सबसे पहले इसको देंगे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, ठीक है। इन decimal distribution, dash liabilities are paid first. Secured liabilities, unsecured liabilities, partners capital या creditors. In decimal distribution, dash liabilities are paid first. Secured liabilities, unsecured liabilities, पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स कैपिटल, चलो वैसा ही। तो पहले कौन सा देंगे हम लोग? सिक्योर। मतलब यू विल बैलेंस स्टडी। सो आई एम हैप्पी टू सी दैट ये पढ़ाई कर रहे हैं। सिक्योर लायबिलिटी सबसे पहले। यस, तो यही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है। ओके, देयर आर लायबिलिटीज फॉर क्रेडिटर्स 60,000 एंड बिल्स पेएबल 40,000. The cash received after selling an asset is rupees 10,000. Okay, find the amount payable to both.
The amount payable to both the above liabilities is dash 3,000, 2,000, 6,000, 4,000, 7,000, 3,000, 5,000, 5,000. The amount of creditors and bills payable is 60,000 and 40,000 respectively. The amount received after after selling assets is rupees 10,000. The amount payable to the board is dash 6,000, 4,000, 7,000, 3,000, 5,000, 5,000, and 8,000, 2,000. इधर कुछ तो है, the creditor 6,000, okay, and bills payable को 4,000. Yes, 6 and 4. क्यों? मैंने कहा था कि रेशियो में देना है अनसेक्योर्ड लायबिलिटी. यस, आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो पीसमील पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले भी आ सकते हैं. आई होप कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक अंदाजा आ गया. यस, तो स्टार्ट रनिंग योर ब्रेन अकॉर्डिंगली. एकदम ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ते रहो, आपके एमसीक्यूज अपने आप हो जाएंगे. या आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल नाउ. आगे वाला टॉपिक कौन सा है? अमालगमेशन. अगर अमालगमेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स करने रहना. कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो और फिर ऑब्जेक्टिव शुरू करो. मैक्सिमम पीपल आर रिप्लाइंग या पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं सर वो इंट्रोडक्शन के बाद एमसीक्यूज आंसर करना इजी पड़ रहा है. तो एक मैक्सिमम आंसर है, इवन दैट विल बी एप्लीकेबल टू अस एवरीवन, राइट. तो इंट्रो लेक्चर पहले देखो, कंसेप्ट ले लो दिमाग में और फिर एमसीक्यूज शुरू करना जवाब देने के लिए. ओके. अमालगमेशन के in case of amalgamation, dash firm close their business forever. Old firm, new firm, only one firm, or can't say. In case of amalgamation, dash firm close their business forever. Old firms, new firm, only one firm, या बोल can't say. Old firm, right? दोनों बन जाती. Okay, the value or the amount payable to the old firm, in case of amalgamation is known as dash. The amount payable to the old firm in case of amalgamation is known as dash. चलो इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, कितनों को याद है देखते हैं. Very good. Purchase consideration. Okay. The method of purchase consideration where the value of assets and liabilities are revised is known as dash. The method of purchase consideration where the value of assets and liabilities is revised is known as dash. इसका याद है किसी को? इसी में बड़ी दो मेथड होती है. क्या है? Revaluation. No. The method of purchase consideration where the assets and liabilities are revalued is known as dash. ठीक है? किसी ने दिया ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट असेट मेथड. असेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करके जब किसी मेथड, दो मेथड कौन सा है? नेट असेट मेथड. और लमसम अगर दे दिया ऋषि झा, when you are giving lump sum, so that is net payment method. Okay. The method of PC where the payment made to the old firm is clearly given is known as dash. जब पेमेंट कितना किया है वो क्लियर कट किया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड. ओके. In case of amalgamation, the old firms are dash reopened, dissolved, okay, registered in a new firm or all the above. Old firm क्या हो? Old firm. In case of amalgamation, old firms are dash dissolved, newly opened, या registered newly, या all the above. So dissolved. Very good. Okay. The effect of dissolution is shown through dash account.
The effects of dissolution of old firms, चलो और ऐड कर देते हैं, is shown through dash account, revaluation account, realization account, profit and loss account, or trading account. The effect of dissolution of old firm is shown through dash account, realization, revaluation, profit and loss account, or trading account. Very good. Realization account. Okay. The purchase consideration receivable by the old firm is dash, okay, debited to realization account, credited to realization account, debited to partners capital, yeah, credited to partners capital. The amount of purchase consideration receivable from the new firm is debited to realization account, credited to realization account, debited to partners capital account, credited to partners capital account. Answer आ रहा है credited to realization. Very good. That means you have started studying, and that's really a good thing. में लॉ कोड इन सब चीजों पे भी ध्यान देना, वरना लोचा हो सकता है कि हम लोग इन सब में तो चले जाएंगे, अकाउंट में तो इजीली पास हो जाएंगे, पर उसमें लोचा होगा. ओके, सो बी वेरी प्रैक्टिकल, उसका भी थोड़ा सा स्टडीज करते रहना. वेरी गुड. क्रेडिट टू रिलेशन, एवरीबॉडी इज परफेक्ट टिल नाउ. ओके, द अमाउंट ऑफ पीसी रिसीव्ड, the amount of PC received is dash, credited to new firm, debited to new firm, credited to realization, debited to realization. The amount of PC received is dash, debited to new firm, credited to new firm, debited to realization, credited to realization. PC received, debit to new firm, no. Debit to new firm, no. Debit to new firm, no. इसे मिल गया ना, तो दिया किसने? न्यू फर्म. तो न्यू फर्म विल बी द रिसीवर ऑफ गिवर, यानी उनका नाम क्या करेंगे? क्रेडिट. क्लियर? कंफ्यूज होने का नहीं. न्यू फर्म क्या होगी? क्रेडिट. और डेबिट कौन होगा? पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज दे विल बी द रिसीवर. ओके, अच्छा. When excess capital or when excess PC is paid over the net asset value, the amount is transferred to dash account. When excess PC is paid over the net asset value, the amount is transferred to dash account. P&L account, goodwill account, capital reserve account, or can't say, yeah, all of the above. मैं ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव अभी फॉर्म करके बोल रहा हूँ, इसके लिए देता हूँ. प्रैक्टिकली आपको वो आने वाला नहीं. ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन आने वाला नहीं. आई रिपीट द क्वेश्चन. द एक्सेस ऑफ पीसी ओवर द नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और ऑल द अकाउंट. ओके, एक आंसर आया है ऋषि झा का. गुडविल. वेरी गुड. ओके, एक ही आंसर अब तक आया और वो सही आया. गुडविल. या द प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ न्यू बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ परचेज ऑन द बिजनेस इन केस ऑफ अमालगमेशन इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट. द प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ अमालगमेशन is transferred to dash account. मैंने बिजनेस परचेज किया, ओके, कोई एक बिजनेस मैंने टेक ओवर किया और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी किसी मैंने ज्यादा दिया या कम दिया? कम दिया. जब कम दिया तो वो प्रॉफिट है. एग्जैक्टली ऑपोजिट, लेकिन मैंने एक्सेस बिक्सेस कुछ वर्ड यूज नहीं किया. तो गुडविल का एग्जैक्टली ऑपोजिट कहाँ जाएगा? वो कैपिटल रिजर्व. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, recall the entries and then you answer the question. एक मिनट लगेगा, नॉट अ बिग डील. 5 मिनट में आपको 40 आंसर लिखने. अगर आप 50 आंसर भी लिखते हो, मार्क करते हो, इट्स नॉट रॉन्ग.
ओके, द सॉफ्टवेयर विल बी टेकिंग इट ऑन देयर प्रायोरिटी, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो आपका गिना जाएगा। 40 ही अटेम्प्ट करने हैं ऐसा नहीं। क्लियर? तो आई होप कि अमालगमेशन से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल एज वेल एज। ओके, द कैलसी है सबके पास नहीं होगा, आई डोंट एज्यूम, आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू डील विद द कैलसी करेंटली, या देन conversion or sale of partnership. See, I am running a partnership business, suppose me, okay? और मुझे ऐसा लग रहा है यार पार्टनर कितने तरफ के पार्टनर रहेंगे, मैक्सिमम लिमिट कितना है? If you are doing banking business, 10. If you are doing general business, 20. But if my business is running good, it's having a value in the market, it's having a demand in the market, people will be interested to invest in my business. But I cannot cross the limit. That is the first thing. बराबर 10 जन ही मिलकर बैंक चला सकते हैं, 20 जन मिलकर ही एक जनरल बिजनेस कर सकते हैं. But if someone wants to invest in my business, obviously I need to convert the business from partnership to the capital, to the company. Sorry. Okay, so that is what conversion is. Or else हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और किसी ने अप्रोच कर दिया, ए भाई दूसरा एक काम करना, तू चावल जो मत दे, तेरा बिजनेस हमें देख दे, हम लोग डिमांड यहाँ पे कराएंगे, तो हमें कुछ करना है, राइट? तो सेलिंग और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नथिंग बट ब्रिंगिंग एंड टू योर ओन बिजनेस. हम लोग 2 जन मिलकर चला रहे, एक अगर सफल गया, छोड़ के चला गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, in that case only I am there. So sole trading concern is not a partnership firm, but we are registered under partnership. तो नया पार्टनर ढूंढ कर अपना रिस्क बढ़ाने से अच्छा, प्रॉफिट शेयर करने से अच्छा, मैं अपने ही बिजनेस को पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट कर दूं, ऑप्शन है, राइट? So these options are available with you, and conversion is nothing but that. When you exceed a limit of the partnership, either कम हो जाए या बढ़ जाए, okay? When you want to keep the capital with you in control, when you want to share the maximum profit, then when you are not fulfilling the legal requirements of the membership, then there are different reasons why you need to close your partnership business. तो पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बराबर? यानी कि बंद करेंगे, यानी क्या करेंगे? डिसोल्यूशन. तो अमालगमेशन के बाद मैंने आपको डिसोल्यूशन यानी क्या, वो कोई जगह अच्छे से समझा दी है, राइट? सेम थिंग्स आर फॉलोड ओवर हियर. और आप बंद करोगे, पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली दैट कंपनी विल बी पेइंग यू समथिंग अगेन, तो पीसी वहां पे भी ढूंढना पड़ेगा. इतना ही कि अमालगमेशन के कंपैरिजन में कन्वर्जन और सेल ज्यादा इजी है, छोटा सा है, प्यारा सा है. बाकी एंट्रीज आर रिमेनिंग द सेम. Okay, the concept is remaining the same. You are just converting. Okay. In case of conversion,